Good morning, everybody. Welcome to the live broadcast of 2025 Smash and Grab T20. This is the first semi-final being played between Kings 11 Calgary and Whiterock Warriors. These two teams are from Group A. This is a playing 11 on your screens for Kings 11 Calgary. Sanjay Krishnamurthy, Arsh Dhaliwal, Hamza, Harobin, Shubham, Matthew Tromp, Sukhjeet, Lovepreet Singh, Sukhdeep Brar, Ovesh Jamshed, and Simran Virk. To give you the toss update, Whiterock Warriors have won the toss. They have elected to bowl first. Alongside me, I have Sundeep RAINA, who have joined me in the commentary box. I welcome him. Good morning, Sundeep. Good morning, how are you? VIBHOR, the day that matters, the third day of the tournament, two semi-finals and the big final to be played later in the evening. Two semi-finals being played concurrently. One at Inlands, where we are covering the live coverage, and the other from the West End. And the first ball is about to be bowled. Shadley, pitched up. Played towards cover, where the fielder fields. Dot ball to start off with. Just to remind everyone, Whiterock Warriors had a league game with Kings 11 Calgary where they dominated them, and here first runs on the board. They are off the mark with the double, and that's overthrows. That's more runs. And they came back for three. That means Hamza will be back on strike. He was in sublime touch yesterday. Had a brilliant knock. He was one of those guys who was dominating the batting lineup. 3 runs have been scored already. He's facing his first one. And that's a beautiful start to start off. And can be a first boundary. No, it's not. So they are coming back for 2. Picked up beautifully off his pads, Hamza there. Gets a couple. Opens his account. Kings move to 5. Defended back to the bowler. The weather gods have been kind today. VIBHOR. It surely has been because we were predicting rain in these days. Like, that's edge, that's sliced. Third man's there. So won't be any harm. Just a single. We were predicting rain yesterday as well, and day before that as well. But fortunately, we have been able to get through this tournament. We're now in the knockout stage. 2 semi-finals being played. One at West Winds, one here. And then the final will come up in the evening. Wide. So that's the extras for the day. The first ones. Whiterock Warriors, they have been the table toppers with the huge run rate, net run rate. When we talk about the team, the way they have dominated the other teams in their group. What would you like to say about that, Sundeep? No, they have been absolutely brilliant. They've played. There's an appeal for caught behind that has been given. The batsman thinks he did not edge that. Shake of head. But the umpire was convinced. The men who matter convinced. First strike for the White Rocks. Shadley, short of length, outside the off stump, moving a little bit away from the batsman. Good length and good line there. Sanjay walking back to the dugout. There was no footwork there.
with the new ball, you need to have, as an opener especially, you need to have that kind of footwork so you can tackle the swing. Maybe it just did a little bit, not too much. Just after it pitched, it nipped out, and that's where he got caught up with that. So it's a one down already. The new man in, her Robindeep Sekhon. Plenty of experience, 205 matches, one of the best players in their side. And he scored 5,800 runs. Big game, nerves. Often we have seen the team that holds their nerves emerge victorious. On that occasion, the feet didn't move, got the edge, and the keeper made no mistake. Such an important aspect of the game, wicket keeping. It's never talked about. You know, we cannot tell how much a wicketkeeper does to a team. They try to keep you motivated from the behind the stumps and then take some important catches as well. We just think they have got a gloves in their hand, so it's easy for them. It's never easy. Cricket's never easy in anything. It's a thankless job. As the fresh over starts, Anuj lobbed up into the air. The fielder is trying to get underneath it. Doesn't get there. Collects one bounce. The batsman cross for a couplet. Anuj, left arm medium pacer. We often like to see left arm seamers bowling with the new ball. We usually see left arm seamers pitching the ball up, trying to swing it in towards the right hander. But we heard a lot about Anuj saying he's not a traditional left arm steamer who will try to bring the ball in. He's more of a bowler who will try to take the ball away from you to get that nick into the play. That's what we saw on the first delivery as well. It was short and good length going away from Hamza. Again, same one. That's a beautiful shot picked up. It's a maximum. Hamza gets the first one for the day. Gets on one leg, rocks back, and punishes. No half majors there. Gets a boundary. Pardon me, it was a maximum 6. Beautiful shot. Talking about keepers, earlier days, keepers were mostly picked up for their wicket-keeping skills. VIBHOR, and now the game has changed so much that they want keeper to be contributing to the bat. The next one has been slashed by Hamza over the point boundary for another maximum. Lent into it through the hands. Not too much foot movement again, but got the connection. Maximum there. Barring the loss of the wicket, that's the kind of start Kings would have wanted. Back-to-back maximums for Hamza. He's trying to go big again. Misses this time. But they got off to a good start even after losing a wicket. 21 for 1 after 1.4. Usually teams would like to have a good power play because the first 6 overs are important, because only 2 fielders are outside that 30-yard circle, which comes in very handy to score runs. Even your mistime shots can just go over them. That's well left. Well left. You need to give respect to the good balls, Sundeep. Absolutely important to play on the merit of the ball. Good start in the sense that Whiterocks have been bowling well in this tournament. He steps out this time. A little bit of missed time, chance of a direct hit. At one time, everybody thought that it's going to carry to the mid-on,
but it's not. So it's a sigh of relief for Kings 11 because Hamza is one of the key players. They want him to be in the middle for as long as possible. It's end of 2 overs, 22 for 1. This tournament. Maximum. He smashed 2 in the previous over. He just wants quick runs. We saw that from him yesterday as well. He took the single on the last ball, was a half chance for the mid-on fielder. Now back on strike, straight away starts the over with a maximum, attacking the main bowler. Looks like he's carrying on from yesterday. Hamza. Teams started to look at wicket keepers differently when Gilchrist burst on this international scene. Brilliant shot over the covers. We'll have to wait for the signal. Boundary signal by the umpire. Neeraj and Paul, the two umpires officiating this match. It is a treat to watch bat him like that because he's one of the best players in Calgary. He has represented Canada as well, and you can see that class. You can see that temperament. You can see the way he's playing. He got beaten up this time. It was a play and miss, trying to make some room. He's taking on all the field styles. He has targeted square leg in the previous over, then hit a 6 over extra cover, then this time on that country region, and the previous boundary was hit near the mid-off and the cover, so that's a wide. So bowlers feeling some pressure because once you start to attack the bowler, they start to do different things, they start to try different things, and that's where they make mistakes as well. This is one of those. Really important to stick to their plans, let the batsman do a mistake. That one has been flicked. Is given as a leg by. Looked like it hit the bat, but umpire Neeraj signaling a leg by. Sundeep, this guy on your screen, Robin, this is one of the best players in Calgary too. He has that potential to play for Canada. He's got that temperament, the skill set. I just hope he performs today because it's a big game and he's playing against a big side. If you look at the experience, the amount of experience he has, 205 matches, over 5,800 runs. Head towards deep square leg. Single. And these are the kind of leagues that you would want to be performing to be noticed. These are the kind of leagues that should help the cricket organizations to get a pool of players from which they can pick up the national team.
Sandeep, this guy on your screens again. Robin versus Sukhjinder. This is going to be a key battle because Sukhjinder is one of the experienced guys. He's also being selected for Canada as well, Sukhjinder. He's got that left arm spin, and he's very good at doing what he does. He's very economical, takes wickets. I think he's the highest wicketer of the league so far, Sukhjinder. He makes some room, Hamza. He's in a different mood today. He's not stopping. That's a 6. What a brilliant shot. He knew that Sukhjinder's strength is to bowl wicket to wicket. He made some room, adjusted the moment, and just look at that. One of the most difficult areas to hit 6 in. I've never seen someone hitting Sukhjinder like that. I know him from a while. He makes some room again. He plays near the mid-on. We'll just get a single this time. But I'm pretty sure Sukhjinder's going to come up with a different plan now because Hamza is trying to take on him. You can see he's trying to make room there, expecting the ball to come in. Nice drift, driven towards extra cover. The fielder's giving chase. Batsman walk for a couple. Lent into that drive. Harbinder. Kings move to 45 for 1. It's a really good start for a power play. That's a good delivery, but they have played nicely. But the good thing is they haven't played a single dot ball yet against Sukhjinder. Usually he's very economical. He's very tight with his lines. But if you look at the timeline of the scorecard today in this over, it's 1-6-1-2-1, which means no dot ball. Continuously they're rotating the strike and hitting the big ones whenever they want. That was a nice delivery. That was a nice one to finish up the over. It's 46 for 1 at the end of 4 overs. Bowling change. That one has been picked up. Short of length ball over the mid-wicket boundary for another maximum. These guys are taking the attack to cleaners here. Wanting to max on the power play. Ali. Another left armour. Warriors operating with spin from the both sides as that one slashed hard. Another couple. Harbinder moves to 13. Hamza doing the bulk of scoring. Watching for another end. 35 not out. That's a big shot once again. And what a shot. It has gone all the way again. Sandeep, this is just brilliant batting. That's all I can say from Kings. This is impressive hitting. This is magnificent batting already.
quality of the bats these days, I tell you, just matter of getting the timing right. Beautiful shot for her Robinda. Plays it nicely, plays it late. Will just be a single. Score moves to 61. Usually what we have seen at this inland cricket ground is 160 is just around par score. Teams feel comfortable, but I think this is a big game. They will like to score around 175, 180 if they can maximize the start. What a shot once again. What is this going on? This is pure batting masterclass. Umpires just double checking with the fielder. I think his hands are gonna go up. There we go. It's a maximum. What a big over this has been. 21 runs. This is the same team they got bundled out for 108 against Whiterock Warriors in the league game. Just look at the difference now. They have worked on to their mistakes that they made, and now they are just going absolutely excellent. I think the Whiterock bowlers have to make amends in their lengths. They have been on the shorter side of the length. Sukhjinder is back again. Got smashed for 11 runs in the first over. Bowls it short this time. Hamza. It's a battle of big players now. Current national player Sukhjinder Singh and Hamza Tariq, who has also played for Canada and global T20 as well. He has played some big leagues. That's a quicker one. That's one of his strengths. He likes to bowl quick at certain stages, and because he knows batsmen's trying to attack them and he's bowling in power play, he doesn't have much room for error. So he's trying to go quick. Put away towards deep square cover. Boundary signal. Again, erring on the length. These two guys must be knowing each other's games well. They play for Canada. So far, Hamza has played well against Sukhjinder. I think the key here is not to get carried away. That's in the air. That's just gone up. What a try. What an effort. We'll wait for the confirmation. Whatever it is, if it's a boundary, then also it's a maximum. Then it's also 50 for Hamza. The fielder's not looking good here. He has hurt himself. Pulled off a brilliant dive to stop that. Maybe he has hurt his shoulder. Maybe. I'm not sure. Because the kind of effort he pulled off. Straight away, we are seeing all the players coming towards him. It's a matter of concern because he's one of their main guys as well. That's cricket for you, VIBHOR. You play hard in the field, but the welfare of each other has to be paramount. He fell flush on his shoulder. Never easy to take those kind of catches that are high and
running away from you. In the end, he put a full-length dive, landed on his shoulder. Let's hope that he's okay. But I mean, Sundeep will have to praise the way these two are playing. They have just smashed this bowling attack of Whiterock, which was known to be one of the most dangerous bowling attacks in this league. We are still waiting for the confirmation whether it's a 4 or a 6, but whatever it is, it's 50 up for Hamza Tariq because he's on 46. And what a brilliant knock, back-to-back 50s for him. And what a game to do it in. Pressure game always. You have to be thinking clear. Your mind has to be clear in terms of your plans. I said earlier, if you have to keep your nerves. These big matches, you would see the best of the players crumbling under pressure. We saw that today in England versus India match. The pressure got to England. Yeah, it's a boundary signaled by the umpire, so everything's fine with that fielder. He is now back on mid-on, his actual position. But look at this guy, Hamza. He's on 50 from 23. The score moves to 76. Is he going to go big again? No, that was a quicker one, back of line delivery. No turn on that. He has never been a big turner of the ball. His strength is to keep you tight, wicket to wicket. But the way they have tackled him today is so good to watch. I think that's what Sukhjinder's plan should be, to bowl wicket to wicket, back his strength. Pitched up, missed it completely, Hamza. Power play done, 76 for 1. .76 for 1. End of power play. Now will be interesting to see, Sundeep, how things goes from here, because middle over is just one of the phase where most of the teams start to lose wickets, because now 5 fielders will be outside the 30-yard circle, and in some of the cases where your mistime shots were going for a boundary in the power play overs, now they won't go for the boundaries, so you might lose wickets doing that. Look at that chip in the air. So he's coming back for 2. They are very fit, very quick. The coordination is pretty good. So they'll easily make 2. So the main thing will be here is it will be fine if you're not able to get some boundaries, but you have to keep rotating the strike so that you get the scoreboard ticking. You're right, VIBHOR. This is the important phase in T20s. The 7th to 15th over. That's gone! Straight into the hands of short third man. Dug in short. Harbinder couldn't place the ball. Went straight into the hands of the fielder there. And that's what we were talking about before.
It's a big wicket. It's a big wicket. Not only this partnership's broken, it's Harobindeep, who is one of the key players on their side, came in at number 3, scored with the strike rate of 200, smashed 2 sixes, is now going back. Shadley took that catch near that backward point, third man region. He was just trying to guide it, and he just missed the trick there, I guess. He didn't knew the fielder was just standing there to catch that, and he just played that straight into his throat. You see so many batsmen getting out in that fashion these days. It's important for Hamza to bat long now. He's got the start. Harobindeep also got the start. Would have wanted to carry long, but unfortunately he had to walk back to the dugout. They got a good start. They need to make sure that they don't waste this good start. Salman picking up a wicket in his first over. He's quick. He's making good use of the short ball. The short ball is a potent weapon provided the direction, the line is spot on. Next one, played deftly towards cover. Batsman crossover for a single. Shubham opens his account. Shubham in at number 4. He played a quick knock yesterday as well. But the main thing now from here is since they've lost wicket of Robin, they are pushing for 2. Can be a risky one. Direct hit would have been dangerous, but luckily it's safe. Shubham safe. He's home. 81 for 2 at the end of 7th. Go ahead, DJ. Wickets, look at the run rate, it's 11.5. I still cannot believe how this game changes. It's the same bowling attack, maybe the same ground, same batting attack. They were bundled out for 108 in the league stage game, and now they're 81 for 2 within 7 overs. This is how every day, every moment this game changes. You need to be accurate with your plans every time you're on the field. A little bit of banter between Hamza and Sukhjinder. I think there's a bowling change, isn't it? Rishi, that's not Sukhjinder. Scoreboard is showing Sukhjinder.
Picked up, bent on the knee there, over final leg fence. Gets another maximum for the team, Shubham. Kings move to 89. Ali Sheikh, he has had an expensive day in the middle. That's another good shot by Shubham. And that has reached the boundary as well. Quicker outfield today. Inland is quicker than a couple of other grounds here in Calgary. The sun breaking out today, helping the grounds to get drier. We could see that in that shot. Beautiful day for a game of cricket here in Calgary. This Whiterock team is from BC. They have been a champion side there. Came into Calgary to compete for this tournament. This is one of the biggest tournaments in Calgary, sanctioned by Alberta Cricket Association and also by Cricket Canada. So everybody wants to come here, show up their skills, their talent. The way cricket is growing up in Canada is so good to watch. These are the kind of tournaments that give you impetus to help develop the infrastructure and support cricket in a much better manner. The next one has been placed towards short mid-wicket, where Salman goes himself and picks up the ball. Hamza picks up another single. He's on 54 from 28, playing with the strike rate of almost 200. He's one of the key reasons how they had a great power play. Plays that towards the cover region, just for a single. The T20 format of the game was key for young boys and girls to pick up the game. It got monetized. You can now think about careers in cricket, which is a good thing. The classic form of the game still, for me, remains the Test cricket. Punch towards cow corner. They're running hard. Direct throw would have been curtains there. The good thing is that they're running the first one hard. They're trusting each other. But they have to be a little careful. Last thing right now they need is a run out. It was a risky one to take, but Hamza, being one of the fittest cricketer here, he will back himself to convert those cheeky ones into twos. That's played nicely. There's a fielder there. Will just be a single. That's end of the over with that single. It's 99 for 2 at the end of 9 overs.
99 for 2. 9 overs. The run rate's at 11 runs per over right now. Shortly, we're going to pull up a poll in the comment box. Whoever's watching, you're watching this live on Live 22 Yards. Don't forget to subscribe the channel, like the stream, share it with your family and friends so that they can have entertaining cricket on the screens too. That's 100 up with that single for Kings 11 Calgary. Sundeep, what do you think? How many runs will they get at the end of 20 overs? Well, if you look at the current scenario, I think the Kings should be able to get close to 200. A lot will depend on Hamza. Work towards deep square leg. They've had very contrasting league games. In the first league game, Kings 11 Calgary, they ended up scoring 250 in 20 overs. Then second game they played against Whiterock Warriors, they got bundled out for 108. Then they started questioning their batting. Then in the third game, where they had to chase the target within 10 overs to get that net run rate up, because that was a big bump happened to their net run rate once they lost to Whiterock with such big margin. So they chased down yesterday's total of 108 within 7 overs. So they kind of had a tournament with the ups and downs, where they scored a very good score in the first game, then had a bad game in the second one, and then a brilliant third game as well. Now, at the moment, we are almost heading towards half of the innings done, and they're looking very solid. Indeed, they are. They are. And small details, the net run rates often come into the equation in big tournaments. I think that 250 helped them there, VIBHOR. Punched towards mid-off. Getting the line of the ball. Head on top of it. Not trying to hit it too hard. Important for Shubham and Hamza to keep talking to each other. Take it by the block of 3 overs, 4 overs each, as the next one has been driven. They have to look at blocks of 3 and 4 overs. It's half of the innings done. We are at 106 for 2. 60 balls have been delivered in the first semi-final here at Inland Cricket Ground. And it's 106 for 2. President as well. President Salman's and back. We're having a chat here. Let's go to the interview. Go ahead. Go ahead. Hello everyone, we're here on day 3 of the Smash and Bash tournament, where Kings 11 and the Whiterock Warriors are currently in the semi-finals, hitting off a great game, and I'm here joined by the team manager and president of Kings 11. How are you doing today? I'm doing good. How are you? I'm good as well, and how are you feeling about the match so far? Oh, we're feeling very confident. So we got a good start, like 10 overs into the game, and with the 2 wickets loss, I think we got a good start. I think that we can wrap up well with the next 10 overs. So we're hoping to get 200 plus on the board. Incredible. And what was your mindset going into the semi-final? Any particular discussions did you have with the team as a manager? Our team has been motivated like the whole way out throughout the tournament, because on
day one, we lost the second game pretty badly. But team was motivated next day, yesterday, coming back onto the field with strong and positive mindset. So I think everybody was focused and focusing on positives as well and strengths. Amazing. And so far, you've gone through the 2 days of the tournament. Now that you reflect back on your experience here so far, did anything stand out to you? Any moments to be highlighted? Moments to be highlighted is like especially our batting at this point. I would say like Hamza Tariq, he has been batting, gave us a good start today, and then partnered by Shubham Ranjane, who's here to play from US. So it's strong partnership going on. I think if they can carry it forward for next few overs as well, that will give us a good score on the board. Amazing. Well, thank you so much. We wish you the best of luck and really look forward to seeing how the game plays out. Sounds good. Thank you so much. Thank you. Great job, girls. Well, we have just witnessed most outrageous shot of the innings so far by Hamza. Saw that early, bent and scooped it over the keeper's head for a boundary. Hamza has hit the ball in all directions of the ground. Joined by the team manager for Whiterock Warriors, Navdeep. How are you doing today? I'm good. How are you? I'm good as well. And how are you feeling about the game so far? Doing good. Yeah? Yeah. You guys are doing a wonderful job. And the last, I think, 8 overs left. So we'll see. Incredible. And is there specific discussions you had with the team going into it? Actually, we won all the games and we were like top performer in our group. So guys they played here. They are very much aware of what they need to do and what the target we were looking for. Are you looking to have any particular conversations before they start batting? Well, I don't involve my captain Mansaf Gill. He played international and for India for a state level. So these guys are pretty much I think 4 to 5 international players playing for us. And then looking back on the tournament the last couple days, any particular moments that stood out for you, or how's your experience been for the tournament with the level of competition we've seen this year? Actually, this is our first year for we participated for Calgary Bash, and weather was like first few days, but forecast was rainy, but somehow it went really good. Yeah, we're enjoying it. Amazing. Well, thank you so much, and best of luck for the rest of the match. And we look forward to seeing the results Thank for you. Thank you. Take care. Thank you. Good job, girls. Good job. Sukhjinder in operation here. Comes back. Was expensive in his first well. Rear sweep appeal. Looks like it was just outside the off stump. It was very close. Perilous. I'm sure if there was a DRS, the bowler would have taken the DRS here. It was close. It was pitched full. Sukhjinder, he's made a good comeback here.
after being hit for a few boundaries in first few overs. That's in the air, chance of a catch. So now things have started to happen for Sukhjinder. Finally, just 2 runs in this over and 3 dot balls, which we haven't seen in this innings a lot. Usually they have been able to hit boundaries and rotate strike very easily, but this over has been a good one. But can it bring a wicket for them? A quicker one, straying down the leg. Should have been on off stump to build some more pressure. They are coming back for the second with that overthrow. That's sloppy from Whiterock, which we never see. It's sent off the over with that double. It's a 120 for 2 at the end of 12 overs. The end of 12 overs. Shubham and Hamza. They're playing a good part here. They want to come back for 2. Hamza wasn't trusted, but Shubham denies it. That's a good call, I would say. Is the old adage, never run on a misfield, VIBHOR? It's true, not a good idea. इसीलिए तो कपिल पाजी कहते थे कि जैसे मर्जी आउट हो जाओ, रन आउट नहीं होना है. Look at this partnership. 43 from 34 deliveries. 16 run contribution from Hamza. Plays it nicely with soft hands. Guides it. Score moves to 122. Anuj, he's bowling his third over. But this partnership has been a game-changing because they lost wicket off her Robin right after the power play. And then this partnership was very important. And they have pulled it off. Punches on back foot. They're pushing the first one hard.
they'll easily take the 2 because they put pressure on the fielder there. Talking about Kapil Paji, he was one of the fittest cricketers in his times. When physical fitness, as that one has been driven towards long on. Fielder comes cross. Good throw there. Good arm. Those were the times when there's no culture of going to gyms. People used to walk and run, and another misfield here. Should have cut that off. That is sloppy. The Whiterocks have been a little sloppy today on the field. How many times have we seen that a team dominating in league stages suddenly starts to feel nerves in the knockouts? And the team who have a little bit of ups and downs in the league stage, they make their game plans according. That's a brilliant shot. Hamza Tariq has been brilliant today. That has gone all the way for a maximum. Everybody wanted Hamza to play those shots, Hamza to score big, and he has done so. 133 for 2 at the end of 13 overs. Go ahead, DJ. It is about peaking at the right time, VIBHOR. Looks like Kings might have just done that today. We'll have to wait and watch. This is a cruel game. Yes, it is for sure. I remember just from the recent test series that India have played, Mohammad Siraj, the same thing that I was talking to you earlier. Mohammad Siraj, a true fighter for Indian team. He got out in that Lord's test match when India needed 23 runs, and one of the saddest moment for him personally and for all the Indians, because it's obviously a dream of every Indian to win on wicket of Lords in the Stadium of Lords against the English crowd. He had that moment and then came back, played all 5 test matches, no workload management, nothing. Dropped Harry Brook when he was on 19 at the fine leg, took the catch but went out of the boundary rope. Took 5-wicket haul to let India win by 6 runs today and draw the series. So this is a kind of game which is cruel, and at the same time it gives you chances every time. If you look at the bowler, he's got 4 overs to bowl, right? Sukhjinder, who was expensive in his first 2, made a great comeback, and now he has finished his spell at 27 runs in 4 overs. No wicket, but it's 137 for 2 after 14.
outside the off stump, not moving the feet, throwing a kitchen sink at it. War horse, Siraj. It becomes extremely important for management. As the batsman attempts hit over, the final leg swept for a boundary. Hamza has been playing that shot pretty well. Moves to 81. He's got a great chance to get to the three figures here. 141 for 2. That's a big one once again. Chance of a catch. It's a drop. Every time we mention about a player getting personal milestone, I don't know, these kind of things happen, Sandeep. This is a commentator's curse, I would say, or whatever. In this scenario, it was not, because it was a drop catch, but at least the chance was created. So for Hamza to get 100, he would obviously want us not to speak about that. That was a chance of another catch and a drop. Another one, and umpire will confirm whether it's a 6 or a 4. It is a 4. It's a boundary. The scorecard's moving very quickly. Look at the run rate. It has never gone down past 10 runs per over. 146, almost at 10 runs, 14.4 overs. They got 8 wickets in hand. Perfect foundation for big scoring death overs coming up, I guess. Tries to cut that. Was thinking of a wide here. The modern T20 game has no place for personal milestones anymore, VIBHOR. A quick fire, 25 from 5 balls, wins you matches, and you'll see 100 being hit and still being on the losing side as the batsman attempts a reverse switch. The length was there. Shubham couldn't connect there. End of the over. Expensive spell there from Manoj. Went for 44. 15 completed. 146 for 2. Kings. .146 for 2. 15 overs gone. Hamza's 100 is just around the corner. Don't want to curse it, but he's looking so good. He should be able to get that milestone. It's good to have those milestones for your personal confidence as well, because if they go on to play the finals here, because oh, that's a misfield. That's a misfield. That's 150 up with that boundary. You won't expect that kind of fielding from a team like Whiterock Warriors, because they have been a champion side. They are a very popular side. They have big players in their team. But at the moment, cricket's winning. This game is winning because this game teaches you something new every day. You cannot underestimate any team on the given day when you're on the field. Whoever plays best will be the favorites of winning the game. Hamza tries to be creative, tries to be innovative with his shot skill. He has been so good to watch. Maybe having a little chat. Bowlers trying to say in something. Having a fun banter there.
The good thing is Hamza is not thinking about 100. He's going for it. He just has to choose the right ball. Still 4.5 overs to go. Hit towards long on boundary. It's a single. It's 151 now. Yeah, you don't need to play these kind of shots if the conventional shots are working out for you. He's been playing nice pull shots, cuts, over covers. At times he has gone over long on and long off. So if those things are working for you, you don't need to try something different. I remember Rishabh Pant trying doing that, and now he's having a fracture on his foot. Got ruled out of the 5th test match. Was just trying to do something different. But that is Rishabh Pant. He loves to do different things, but Hamza Tariq here, you'll maybe back him to play his conventional shots because he's that kind of player. But in the meanwhile, that's end of the over. They got one boundary of that. It's 154 for 2 at the end of 16. Shubham goes big and he has connected that. He has picked the bones out of it. Sundeep, this is brilliant batting. I know we have been talking a lot about Hamza, but we forgot to mention just a little about Shubham, the way he has played in this partnership. He's on 43 from 31. Well, he's got support from the other end. You know, that has been something that has not put Hamza under pressure. Great pickup shot. I think that was the longest 6 of the innings so far. 160 now. Another slog, sweep, but all along the carpet. Picks up another single. Shubham moves to 44. Sharley is given out. Gone there. He chose a wrong ball to hit that shot. Was wide. Threw the bat at it. Got an edge, but what a fantastic knock Hamza has played here. We've witnessed some batting from him. He would be distraught with himself, VIBHOR. Yeah, what a knock. What a knock. Hamza, in pressure situation, you expect big players to step up. That's what he did. 89 of 53. Won't be very happy the way he got out. He chased the delivery, which was way outside off stump. Maybe a wide if he would have left that. But he ended up edging that. The whole team's applauding that. Got 6 fours and 6 sixes. Strike rate of 168. Brilliant knock comes to an end. Sharley has been amongst wickets here in this tournament. Matthew is the new man in. Shubham will have to lead the charge now. Matthew Tromp.
Good partnership there for the third wicket between Shubham and Hamza. Matthew boasts of a strike rate of close to 195. These kind of tournaments not possible without the sponsors. Heartfelt gratitude to our sponsors, Butkarai, Sherborne, Prep Ultra, Source Sports, Man Mortgages. Matthew Tromp, he plays the LA Knight Riders. In the MLC tournament. Some marquee players playing this tournament before. Brings a lot of attention and energy into the tournament. Shot, got on top of the bounce there, pulled it towards square leg, batsman running hard, complete. A double, Shubham moves to 46. Shadley. Fuller length, driven towards long off, gets a single, moves to 47. Three overs to go. Kings will still be looking at around 200, VIBHOR. "17 balls to go from here. They came back for 2 on the first delivery. Shubham's on 49. Second batter will be, if he gets 50 here, to get 50 or more. He has been a good batter for them. Played a cameo yesterday against Fort Mac. That was a quick one. They're coming back for 2. And he completes that. If it's bat, then it's 50 up for him. No signal by the umpire. That means it's bat. So that means it's 50 up for Shubham. The second batter for Kings 11 to get the 50 plus score. Big game, big players standing up, standing tall. 2 fours, 2 maximums. Strike rate of 138, which he will try to eye more for it because we are just cruising towards the end of the innings. That's a beautiful. This is one of his strengths. We have seen this in this whole tournament. The way he plays that shot, he's got so much time. You need to be very focused when you're playing those kind of shots. You need to pick the length right and just smash it over. That was Rohit Sharma for you. Cut hard but straight to the fielder. No addition to the score. Ali again on the expensive side of the scale. He's conceded 50. 1 ball to go. Full toss, taken on full, driven. Running quickly here. Throw coming towards batsman's end. Overthrows, but went straight to the fielder. 2 more. They're running hard. They want every run there. They got wickets in hand. 175 for 3.
You expect him to play these kind of shots, and that's a 6 to start the second last over. Shadley, he's one of the marquee players as well. When it's a contest of marquee players battling against each other, you'll see the best of them. We've got Hamza, who's ready for the interview there. Here we go. Hello, everyone. I'm here joined by Hamza Tariq. Hamza, how are you doing today? I'm good. How are you? I'm good as well. And what an incredible knock you've just played with 89 runs on the board. How are you feeling after that? Thank you very much, first of all. Obviously, the game is not done yet, so we still got a couple overs to go. The plan was to try and bat all 20 overs, but hopefully we can get a good finish and then defend this total. Absolutely. It was incredible to watch. And now this is nothing short of a high-stress game. How have you kept your calm going into the match and keeping it while you're on the pitch? I think in T20 cricket, you just want to be positive as much as you possibly can, regardless of if you're playing a league game or a playoff game. If you stay positive, you have a positive mindset, you'll most likely come out on top. Incredible. And how do you feel about the runs that the team's put on the board, and if you think the other team will be able to chase it down? Obviously, it's a good score for a semi-final, but we can't take the other team lightly as well. They're a good team, good batting side. We'll have to obviously play out of our skins to make sure we defend these runs. Amazing. Thank you so much, and best of luck for the rest of the match. Thank you. Hello, everyone, and I'm here joined by Sanjay from Kings 11. Sanjay, how are you doing today? Yeah, doing all right. I mean, got a poor decision, but I think the team is doing really well. Obviously, Hamza and Shubham's knocks taking us a long way, and I'm happy with the total we have. Amazing. And given the incredible total, how do you see yourself setting the pitch or playing on the setting the field and playing the pitch from here on forward? I think the power play is going to be crucial. That's where we have to contain, not let them get off to too much of a flyer. And then in the middle overs, I think it's just about cutting those doubles and, yeah, being smart. Amazing. And reflecting back on the tournament so far, how have you felt about the competitiveness from the other teams? Yeah, it's been a decent tournament. Obviously, a couple of pros per team definitely adds to the quality. But, yeah, again, this team is the strongest team that we've played so far. Amazing. Well, thank you so much, and we wish you nothing but luck for the rest of the match, and hopefully the finals for you as well. Yes, thank you. Thank you. The way I just off. Massive 19th over there. Shadley going for some treatment there. 25, 4 sixes in that over as we begin the last over of the innings. Hit again towards deep cover. Gets a single. The Kings crossed 200 in the last over. Shubham and Matthew Trump in a murderous mood. They have batted brilliantly, Kings. They would have wanted to get close to 200. And this one is picked up. One bounce, long off. Looking for another, but overthrows led them another one. Ball not happy. Quite a few overthrows.
in this innings from Whiterocks. Salman bowling the last over of the innings and his spell. Shubham 71. Another 4. Using the height of that ball, walking across and putting it away towards final leg boundary for 4. Excellent presence of mind there, VIBHOR. Seven of the first 3. 207 for 3. Salman pulls the next one, and that's another shot. I think that's gone the maximum. It is. He's using the pace of the ball pretty well, anticipating what the bowler is going to do. That is smart from Shubham. He moves quickly to 81 from 45. That is top-class anticipation. It is. We were talking a lot about the way Hamza played, but he came in the most difficult phase of the game. He came in the middle overs. That's one of the toughest phases in the T20, where you have to rotate the strike and just do these kind of things towards the end. He's at 81 right now from 46. Just one more to go from this, and they have put a huge total on the board. They've got 213 with 1 ball to go. If he can finish up with the maximum, they can give a target of 220, which will be a big task for Whiterock Warriors to chase in the first semi-final. That's a big one. Is that a 6 that we were asking for? That's near the broadcasting area. That is a 6. This is the finish that they wanted. Kings 11 Calgary, they have just been brilliant to watch in this first semi-final. They finished at 219 with the Shubham scoring 87, Hamza scoring 89. The target is now 220 for the Whiterock Warriors. They were the table toppers with one of the highest net run rates in this tournament. Now they'll have to chase, they'll have to do some planning here. This partnership, Matthew Tromp and Shubham, look at Shubham's contribution, 43 from 15. 15 coming off Matthew's bat. What a brilliant finish. What a brilliant finish. This is the same team they got bundled out for 108. I don't know how many times I have mentioned that, because it's a big, big comeback. That's why they say comeback is always bigger than a setback. And I think they might have just outdone themselves, the Kings there. They might have been thinking close to around 175. But going over 200, 220, we have just seen some brilliant batting from Kings. And they get 220 in their allotted 20 overs. ये इधर है हाँ रहना चाहिए come inside there sit here like hold the ask him 110% sure he said so do I oh the LP mine no mine what they were asking either mine like wait he's on the front foot What a brilliant innings. What a brilliant innings we have witnessed here from Kings 11 Calgary. They have been just brilliant after that setback. The way they played in the second match, they got bundled out for 108. And facing the semi-final against the same team, what a brilliant total they have put. For this mid-inning show, I have SUNDEEP RAINA alongside me. SUNDEEP, I welcome you in this mid-inning. Thank you. What will you like to say about this inning, the way Hamza played and then Shubham giving that finishing touch? Well, how to say, it was magnificent batting. They were in the game right from the start.
I think they were looking at around 175 at the beginning. I was a little bit surprised that White Rocks put them in. Big game, big semi-final. You want to put score on top, but White Rocks probably know their strengths. Excellent batting. This was magnificent display of power hitting. We usually talk about what are the power scores and what are the average totals. From whatever we have covered here at this inland cricket ground, we have seen teams getting 155, 160. They just feel just about right. They are happy with those kind of totals. But looking at the big stage, looking at the smash and grab, looking at the semi-final, they have put 220 on the board. What do you think of this total? I think the White Rocks will have to bat out of their skin to chase this. It is a big score in a big game. The key is how they plan the innings. You know, they have to make use of the power play. They have to plan. They have to look at slots of 5 overs. Go from there. Again, the power play. They have to keep the wickets intact. On the same end, the Kings have to bowl well. They have to believe that they can win. Both sides have to believe they have to win. The Kings have to bowl well. It's never over till it is over. And what would you like to say about this great tournament being initiated by CNDCL? How are you enjoying this so far? Brilliant. It has been brilliant so far. We got a couple of sunny days. We got a rainy day. So it's been all in the mix. But as I said before, in the comm box, these are the kind of tournaments that feed the local talent to the national teams. Being involved in a couple of associate cricket, countries, I've seen how the national players were got into the sides by these kind of leagues. So yeah, has been brilliant, and it's an expensive game now. So you need sponsors. So we cannot thank the sponsors enough for their contribution to this. All right, moving back to the game, what do you think White Rock's strategy should be going forward? Because it's a big total, big game. They can move on to the finals if they get 220, but Kings 11s are coming out to be kind of a favorite here. I think they have to keep their nerve. I think they have to believe that they can chase this. The wicket is not doing too much, so the boundaries are not that big, right? So they have to make use of the power play. They have to plan. Just don't get under pressure. Don't look at scorecard. Don't look at the scoreboard. Just play on the merit of the game, and you'll get some loose balls and hit boundaries and maximums in that. All right, thank you so much. Thank you so much, everybody who has joined us. If you haven't subscribed the channel yet, please do that. You're watching this live on Live 22 Yards. We're heading for a short break, but we'll be right back with White Rock Warriors chasing 220 to win this first semi-final.
Hello, everyone, and I'm here joined by Hermeet from the Whiterock Warriors. How's it going today? It's going good today. Excellent. How are you feeling about the game so far? It's a good game. It's a good target to chase on. Looks a pretty better wicket. I think if you play on a merit and with positive intent, we can do it. How's your mindset going into the chase? Because it is a bit of a high target. When you have a target on board, it's easy to calculate things and like play on a merit, right? You know what you need to chase, so you can calculate and make the plan accordingly. Amazing. And how, looking back on the fielding and bowling side of things, how did that go today? It went pretty well. Yeah, according to the field, it was wet outfield, right? Mhm. And our bowler did on the spot, and that was spot bowling. But in fielding, I think we did a bit lazy thing, but it was just because of the ground, right? It was pretty wet outfield. Amazing. Well, thank you so much and best of luck for Yeah. the rest of the game Thank as you. well. Cheers. Yeah, thank you.
नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका। पहला सेमीफाइनल किंग्स 11 कैलगरी व्हाइट रॉक वॉरियर्स एक दूसरे के आमने सामने और बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया है यहाँ किंग्स 11 ने। 220 रन चेस करने हैं 20 ओवर में। में पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संदीप रैना एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ। संदीप, क्या लगता है आपको, क्या अप्रोच रहनी चाहिए व्हाइट रॉक वॉरियर्स की यहाँ? जी, बहुत मुश्किल टारगेट दिया है किंग्स ने। जैसे भी पहले मैंने कहा कि अपनी नर्व्स पे काबू रखना पड़ेगा व्हाइट रॉक्स बैट्समैन को। पहले 6 ओवर जैसे आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विश्वास रखना पड़ेगा बैट्समैन को कि हम लोग ये स्कोर चेज कर सकते हैं। अगर किंग्स ने इतने बनाए तो कोई ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं। शुरुआत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों साइड्स के लिए, व्हाइट रॉक्स के लिए थोड़ा ज़्यादा। किंग्स के पास थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वो लूज नहीं हो सकते हैं ग्राउंड में। मैंने बोल दिया सभी को, वो लेके आ रहा है। अच्छी गेंद से शुरुआत, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस देखने को मिल रही है हमें। पहले गेंद डॉट बॉल से शुरुआत। जो सबसे बड़ी चीज़ जो डिफरेंस हो सकता है वो हो सकता है पावर प्ले। द वे हमजा प्लेड, उन्होंने जिस प्रकार से अटैक जारी रखा, अपनी पहली या दूसरी गेंद पर ही बड़े शॉट्स लगाए, मैक्सिमम्स लगाए। और ये अच्छी गेंद, अच्छा यहाँ टेक भी हमजा के द्वारा विकेट के पीछे। ये शुरुआती ओवर्स दोनों ही टीम के लिए वो एक फाउंडेशन सेट करेंगे। और स्पेशली लेफ्ट हैंड बैट्समैन की एलिगेंस के बारे में क्या कहेंगे संदीप? हमेशा मज़ा आता है जब भी
एक क्लासी लेफ्ट हैंड बैट्समैन को देखने को मिले। कमाल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन कमाल दिखते हैं। उनकी ऑफ ड्राइव बहुत कमाल। जब मेरी बेटी छोटी थी, एक दिन मैंने उसको बैट पकड़ाया और बोला लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर बेटा। अगली गेंद स्लैश वाइड करार दी गई अंपायर पॉल की तरफ से और स्कोरिंग का आगाज एक वाइड से। सिद्धू साहब होते यहाँ पे तो बोलते गुरु विश्वास हर चीज का रामबाण इलाज है, और वही विश्वास दिखाना पड़ेगा दोनों बैट्समैन को। सिद्धू पाजी की अगर कमेंट्री की बात करें तो सिद्धू पाजी तो ठोको भी बहुत कहते हैं, और जब वो ठोको कहते हैं तो बल्लेबाज बहुत ऐसे ठोकते भी हैं, बड़े शॉट आते हैं। कैच का मौका बना था शायद, लेकिन 6 रन मिल जाएंगे। पहला मैक्सिमम गुरनेक के द्वारा। ये ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम्स देखने पड़ेंगे हमें। जी हाँ, वाइट बॉल थी, पूरा इस्तेमाल किया। विभोर देखना पड़ेगा कि ठोको पे सिद्धू पाजी का कोई ट्रेडमार्क तो नहीं है। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करी बॉलर ने वहां पे संदीप। अच्छी पेस पे डाल रहे हैं संदीप, विकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संदीप कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ है और संदीप ही गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या जादू है ये, जो सभी संदीप हैं वो बढ़िया ही दिख रहे हैं आज। पॉइंट की तरफ खेला, ओवर समाप्त 7 बिना किसी विकेट के। दूसरे ओवर की शुरुआत, एक और लेफ्ट आर्म सीमर। हवा में गेंद है, चिप किया है। अच्छी बात ये फील्डर सर्कल में नहीं थे, नहीं तो आसान सा कैच होता है सिमरन गेंदबाजी के लिए। 220 का बड़ा लक्ष्य। पहले 6 ओवर में कम से कम चाहेंगे कि 70 से 75 रन तो बना सकें, क्योंकि अगर वो फाउंडेशन है, वो आपको स्टार्ट मिल जाता है, वो मोमेंटम मिल जाता है, तो ये सारा खेल ही मोमेंटम का है। यू नेवर नो, कभी भी खेल पलट सकता है। कितनी बार हमने देखा है, वो 2022 का फाइनल याद आता है मुझे आईपीएल का। 1 ओवर में 16 रन डिफेंड करने थे, मोहित शर्मा आए, पहली 4 यॉर्कर्स ऑन द ट्रॉट, सिर्फ 6 रन दिए पहली 4 गेंदों में। 2 में 10 चाहिए थे, सभी ने कहा चेन्नई हार गए हैं। बाहर से आशीष नेहरा मैसेज भेजते हैं, मोहित शर्मा बौखला जाते हैं और 2 गेंदों में 10 रन खर्च कर देते हैं। तो वो जो मोमेंटम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये मोमेंटम शब्द मोहम्मद रजवान का बड़ा फेवरेट है। तो बड़े मज़े के किस्से हैं क्रिकेट की, तो जितनी बात करते रहें उतनी कम। आज का भी ये पहला मैच, एक और मैच, एक सेमीफाइनल चल रहा है वेस्टविंड क्रिकेट ग्राउंड पे। वहाँ जो जीतेगा उनको आना तो यहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल तो यहीं है।
और फाइनल स्मैश एंड ग्रैब का हमेशा से मज़ेदार रहा है। किंग्स 11 कैलगरी जो अभी आपकी स्क्रीन्स पे हैं, दे डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं। पिछले सीज़न बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इनकी टीम की तरफ से देखने को मिला था और ट्रॉफ़ी अपने नाम की थी। प्रयास तो वही हैं, क्योंकि एक बार वो जो कहते हैं कि शिखर पर पहुंचना आसान है, शिखर पर बरकरार रहना मुश्किल। अब एक बार वो ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, अब वहां बने रहना। किंग्स 11 कैलगरी, ये हवा में गेंद है, दूर बिल्कुल नहीं है, नीचे फील्डर है, कैच पकड़ा है और ये बहुत बड़ी विकेट। मनसाब गिल जा रहे हैं बाहर, ये किंग्स 11 कैलगरी के लिए खुशियों का मौका। 9 पहली विकेट पे व्हाइट रॉक वॉरियर्स। जी बिल्कुल, शिखर पे पहुंचना आसान है लेकिन रहना बहुत मुश्किल है। पहला झटका, मनसब गिल टीम के कप्तान लौट के पवेलियन में पहुंच गए हैं। उस मैच में मोहित शर्मा के सामने जड्डू थे, सर जड्डू। कमाल का आत्मविश्वास है उनके पास। यहां मैं देख रहा हूं विभोर बैटिंग टीम को रनिंग बिटवीन द विकेट्स तगड़ी करनी पड़ेगी। पहले ओवर में जैसे 2 सिंगल भागे, पहला वाला तेज नहीं भागे। फील्डर को हमेशा प्रेशर में डालना पड़ता है आपको। पहली रन जो डीप में चली गई थी, बैट्समैन चलते चलते चले गए। ये भी है कि बैट्समैन कभी कभी ये सोचते हैं कि अपने आप को इतना थकाना नहीं है, बड़े हिट्स मारने के लिए एनर्जी कंजर्व करते हैं, लेकिन फिर भी तगड़ा तो भागना पड़ेगा। जी, आपके पास अगर वो वेस्ट इंडियन फ्लेयर है, वो जमाइका का तड़का है, वो पावर है, तो अगर आप के नाम के पीछे क्रिस गेल या फिर आंड्रे रसल लगता है तो आप ना भागे तो समझ आता भी है, क्योंकि वो जो रन आप भाग के 6 गेंदों में पूरे करेंगे वो एक में कर देते हैं। लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे अगर बात करें, जिस प्रकार से रनिंग बिटवीन द विकेट्स किंग्स 11 कैलगरी की रही, हमजा तारिक ने जैसे वो एक एक रन को 2-2 में कन्वर्ट किया, शुभम ने साथ दिया, हर रॉबिन बहुत फिट और मुस्तैद, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हरमीत फ़िलहाल नए बैट्समैन नंबर 3 पे। यहाँ वाइट रॉक वॉरियर्स एक बहुत जानी पहचानी बड़ी टीम, बड़े मैचेस के लिए जानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कंधे थोड़े से झुक गए हैं उस बड़े टोटल के बाद, क्योंकि 220 किसी भी दिन आसान टोटल नहीं है। और स्पेशली जब आप का वो माइंडसेट, वो पॉजिटिविटी रहती है एक आपके खेमे में कि आपने सोचा है कि ये वही टीम से सेमीफाइनल खेल रहे हैं जिनको 108 पे ऑल आउट कर दिया था, और सडनली ये तो सरप्राइज़ हो गया। और सरप्राइज़ ना भी कहें तो ये एक बहुत कमाल का कमबैक हो गया, जिससे अब चौंक से गए हैं वाइट रॉक वॉरियर्स। वॉरियर्स को ये गेम के बारे में खाली सोचना पड़ेगा, उनके दिमाग में फाइनल नहीं होना चाहिए। अभी फाइनल का प्रेशर लेंगे, ये सोचेंगे कि फाइनल में पहुंचेंगे या नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। नया ओवर की शुरुआत वाइड से, अतिरिक्तों पे नियंत्रण रखना होगा किंग्स को।
हर एक एक्स्ट्रा बॉल बैटिंग साइड को अपॉर्चुनिटी देती है स्कोर करने की। कभी कभार एक्स्ट्रा बॉल की वजह से विकेट भी मिलते हैं बॉलर्स को। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ संदीप द्वारा। अच्छा खासा रनअप, अच्छी एक्शन है फास्ट बॉलर के लिए। लंबे कद के हैं गुरनेक, अपनी लंबाई का थोड़ा फायदा तो मिल जाता है बैट्समैन को। अगली गेंद को स्लैश कर दिया है, बैकवर्ड पॉइंट पे बॉल डायरेक्ट फील्डर के हाथ में। स्कोर 12 पे 1, 2.2 ओवर में। संदीप एक और बार स्विंग आउटसाइड द स्टंप और सीधा फील्डर के हाथ में दूसरा झटका। ऐसी शुरुआत नहीं सोची होंगी व्हाइट रॉक वॉरियर्स ने। अच्छी बॉल थी, थोड़ा विकेट के बाहर थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, स्विंग हुई, बैट्समैन ने बिना हिले शॉट खेला, बाहरी किनारा लेके सीधा अच्छा कैच पकड़ा वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर ने। दूसरा झटका, अच्छी गेंदबाजी। जी बिल्कुल, बल्लेबाजी टीम को क्विक रन्स चाहिए होते हैं और गेंदबाजी टीम को विकेट्स। फिलहाल क्विक रन्स का तो कोई अता पता नामो निशान है नहीं, लेकिन क्विक विकेट्स वो मिलती जा रही हैं। 2 विकेट डाउन हो गए हैं व्हाइट रॉक वॉरियर्स। खेमे में निराशा देखने को मिल रही है। पवेलियन इनका वो कंधे अब झुकते जा रहे हैं, क्योंकि गुरनेक जो कि 8 रन बना के अब पवेलियन लौटे। शुभम का अच्छा कैच, वहाँ स्लाइस करने का प्रयास था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, और वो चेयर, वो शोर जब मचा तब पता चला कि कैच हो गया। मैं तो सोचा था चौका हो गया कहीं, लेकिन फिर समझ आया वो चेयर किंग्स 11 कैलगरी की तरफ से आई है, तो ये आउट हो गए हैं। विकेट आ गई है, 12 पे 2 है इस समय। रन रेट बिल्कुल भी जैसी वो चाहते हैं नहीं है। विकेट का कॉर्नर बढ़ता जा रहा है। किंग्स 11 कैलगरी एक स्लिप है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। जब सीमर्स के खिलाफ स्लिप होना, वो फील आती है एक देख के कि कोई स्ट्रेटजी है, कोई प्लान है, वो बाहरी किनारे का इंतज़ार किया जा रहा है। बल्लेबाज की, गेंदबाज की स्किल्स पे भरोसा जताया जा रहा है अगर वो स्लिप इन प्लेस है। नए बल्लेबाज आए हैं, प्रप्रीत। जी बिल्कुल, और तारीफ करनी पड़ेगी किंग्स के कप्तान की। मेरे ख्याल से अच्छा फील्ड लगाया है उन्होंने, और बॉलर भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो फील्ड लगी है उसके हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं। एंगल्स कट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत फायदा देती हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन द फाइनर डिटेल्स जिसे कहते हैं। वाइड, अंपायर को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास, लेकिन अंपायर पॉल बहुत एक्सपीरियंस्ड अंपायर है कैलगरी में। संदीप का पहला विकेट था। अच्छी शुरुआत अभी तक किंग्स 11 की। 220 का टारगेट किंग्स 11 ने दिया व्हाइट रॉक वॉरियर्स को। अच्छी गेंद, बट लाइन खराब थी। पूरा फायदा उठाया उसका, फ्लिक कर दिया। देखते हैं फील्डर रोक पाते हैं कि नहीं। जी हां, बाउंड्री लाइन से 1-2 कदम पहले बॉल को रोक दिया। इसी बीच
प्रप्रीत जो नए बैट्समैन आए हैं 2 रन जोड़ दिए और स्कोर को पहुंचा दिया 15 पे, 2 विकेट के नुकसान पे। वो वाइड की अपील से अक्सर देखा है हमने, गेंदबाज कीपर वो अंपायर को छकाने का प्रयास करते हैं, और एक बार फिर से, इस बार नहीं, क्योंकि वो अब जान गए हैं कि पॉल हमारे हाथ आने नहीं वाले हैं। वो अपने डिसीजंस पे बिल्कुल कायम है। शायद यहाँ स्टीव बकनर होते तो वाइड छोड़िए वो क्या दे देते, कुछ नहीं समझ आता उससे। स्टीव बकनर के क्या कहने, मेरी जबान लड़खड़ा गई। उनके नाम, आपने उनका नाम लिया और मेरी जबान ही लड़खड़ा गई। एक बार शारजा में वो क्रीक पे भाग रहे थे, कोई टूर्नामेंट चल रहा था, मैं अपना वॉक के लिए निकला था, सीधा खेल दिया है, सीधे बल्ले से बॉलर ने रोकने की कोशिश की। यही मैं बोल रहा था, ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स सुधारनी पड़ेगी इनको। तो स्टीव बकनर जब सामने से मैंने देखा आ रहे हैं और वो भाग रहे हैं, मैं वॉक कर रहा था, मैं चुपके से पतली गली से निकल गया, क्योंकि उसी टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ डिसीजन ऐसे दिए थे और उस टाइम पे मेरा फेवरेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, तो ही वाज ऑन द रॉन्ग साइड, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था उनको, तो मैं पतली गली से निकल गया वहाँ। जी, स्टीव बकनर साहब के किस्से तो सचिन पाजी जब जब बल्लेबाजी पे होते थे, भारत जीत की तरफ अग्रसर हो रहा होता था, वो बीच में कहीं ना कहीं से स्टीव बकनर की उंगली आ जाती थी। सत्रह पे 2 है इस समय। आखिरी गेंद डाउन द लेग, फिर से वाइड। ये तीसरी बार इस ओवर में ऐसा हुआ है कि लेग स्टंप या उसके बाहर इस प्रकार से गेंद गई है, और तीसरी वाइड इस ओवर की। संदीप का ये ओवर थोड़ा सा स्ट्रेच होता हुआ, लाल 9 गेंदें कर दी हैं, अभी भी एक गेंद बाकी है क्योंकि 3 वाइड्स, लेकिन अगर विकेट आ जाती है एक और इस ओवर में, जो कि एक इससे पहले आ चुकी है, तो कुछ और भी मज़ेदार यहाँ सीन्स बन सकते हैं किंग्स 11 कैलगरी के लिए। अच्छा स्टॉप वहाँ, अच्छा स्टॉप। जी, दिशा पे नियंत्रण रखना पड़ेगा उनको। सीधा बॉलर के पीछे 4 रन, अशद जरूरत है ऐसे शॉटों की। ये शॉट में कमाल का जमाल था विभोर। जी, कमाल है, जमाल है, धमाल है, सब कुछ है। ऐसे बहुत सारे चौके चाहिए। 2022 वर्ल्ड कप इंडिया बनाम पाकिस्तान का वो मैच याद आता है। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी, ज़्यादा विकेट्स खो दिए थे भारत ने, तब वो विराट कोहली की मिरेकल नॉक देखने को मिली थी।
कुछ वैसा ही कार्य करना होगा। इनमें से किसी एक बल्लेबाज को, ऑब्वियसली पार्टनरशिप्स का खेल है क्रिकेट, पार्टनरशिप तो चाहिए ही है, लेकिन किसी एक बल्लेबाज को वो स्टेप फॉरवर्ड करना होगा। 23 पे 2 है इस समय। वो जिस प्रकार से विराट कोहली ने 81 रन की वो पारी खेली थी, उनकी तो खैर क्या ही बात करें, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम किंग कोहली। अब ज़रूर T20 और टेस्ट से रिटायर्ड हैं, लेकिन लोग आज भी याद करते हैं उनको। लोग हमेशा देखना चाहते हैं। अभी इंडिया डिफेंड कर रहा था 374 इंग्लैंड के सामने, तब भी सभी याद कर रहे थे कि विराट कोहली होते तो शायद 200 पे ऑल आउट हो जाती इंग्लैंड। ऐसा क्या जादू छोड़ा संदीप जी विराट कोहली ने आपके हिसाब से, कि लोग इतना पसंद करते हैं, इतना उनको आज भी याद कर रहे हैं कि आ जाइए रिटायरमेंट से वापस आ जाइए। लेकिन लोगों को कौन समझाए कि एंजेलो मैथ्यूज़ ने रिटायरमेंट नहीं ली है, विराट कोहली ने ली है। मैथ्यूज़ तो साल में 3 बार रिटायरमेंट लेके फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन विराट कोहली ऐसे नहीं। जी इसी बीच छक्का जड़ दिया है हरमीत ने सिमरन को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। आला शॉट। विराट की क्या बात करें, वो मेलबर्न की जो इनिंग्स थी, रब की रूह उस दिन विराट के अंदर घुस गई थी। वो पोजेस लग रहे थे। विराट खुद ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं। अगली गेंद ड्राइव कर दिया है, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। और विराट की एक चीज जो हमेशा बहुत ही उत्तम थी कि वो हार से कभी डर नहीं मानते, कभी हार का डर नहीं था उनके दिमाग में। और यही चीज आप बेन स्टोक्स के कैप्टनसी में देखते हैं। गब्बर ने बोला था जो डरा सो मरा, तो मेरे को लगता है कि विराट ने शोले बहुत बार देखी होगी। जी विराट तो एक ऐसे बल्लेबाज, ये फिलहाल हवा में गेंद है, कैच का मौका यहां भी है, कॉल करनी जरूरी, कॉल हुई है, कैच हुआ है, तीसरी विकेट गिरी है। व्हाइट रॉक वॉरियर्स दे आर इन ट्रबल। तीसरा विकेट पावर प्ले में। हम सोच रहे थे पावर प्ले में बड़े बड़े शॉट्स आएंगे, चौके आएंगे, छक्के आएंगे, लेकिन फिलहाल किंग्स 11 कैलगरी बाजी मारते हुए। पिछली कॉन्वर्सेशन में आपने बेन स्टोक्स की बात की, वो भी एक वॉरियर खिलाड़ी। और मज़े की बात यह है कि विराट कोहली से जब पूछा गया कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, तो उन्होंने बेन स्टोक्स का नाम लिया। तो एक वो जो गोट है वही वॉरियर की पहचान कर सकता है, और उन्होंने बेन स्टोक्स का नाम भी लिया। जब बेन स्टोक्स क्रिकेट में आए थे 2016 वर्ल्ड कप, आपको याद होगा, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 19 रन डिफेंड करने आए थे, आखिरी 6 गेंदें। ऑन मॉर्गन ने कहा चलिए बेन स्टोक्स गेंदबाजी करेंगे, वो मैच अच्छा भी गया था। आए और 4 गेंदों में 4 छक्के। उनको खुद को लगा होगा कि इंग्लैंड को पहला वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट जीत चुके थे वो। 19 रन आप बैक करते हैं डिफेंड करने के लिए। फिलहाल ये खेमा देखें, यहाँ निराशा बहुत सारी। तो बेन स्टोक्स को वहाँ लगा होगा कि शायद करियर ख़त्म, सब समाप्त। लेकिन फिर आती है वो 2019 में वर्ल्ड कप विनिंग नॉक। वही बल्लेबाज, वही बेन स्टोक्स ऑलराउंडर जिन्होंने मैच जिताया, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया। फिर वो हेडिंगली टेस्ट कैसे भूल सकते हैं आप, 136 रन की वो शानदार पारी। और मुझे याद है मैं वो टेस्ट मैच फॉलो कर रहा था, 60 गेंदों में 2 रन पे नॉट आउट थे, दे वर गोइंग फॉर अ ड्रॉ, एंड वहाँ से सिंगल हैंडेडली मैच जिता के ले गए। तो ये कुछ कहानियाँ हैं जिनसे सभी प्लेयर्स मोटिवेटेड फील हो सकते हैं। आई नो इट्स अ टीम गेम, लेकिन कई बार आप अपने आप पे सेल्फ बिलीफ इतना रख सकते हैं कि आप अकेले मैच लेके जा सकते हैं। पॉइंट की दिशा में खेल दिया वहां पे अली ने, 1 रन लेके। जी हाँ, वो जो एनर्जी है वो इन्फेक्शियस एनर्जी हो जाती है। ऐसे लोग पूरी टीम को उठाने का मायदा रखते हैं। 30 पे 3, चौथा ओवर खत्म हो गया।
दिया है। लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से छक्का, उम्दा शॉट। ऐसे बहुत सारे शॉट चाहिए व्हाइट रॉक्स को। ये बिलीफ, ये विश्वास जिसकी बात हम कर रहे हैं, हमारे डीएसपी आई एम ओनली जस्सी, आई एम ओनली बिलीव जस्सी भाई कहते हैं, लेकिन खुद भी उनके ऊपर, अपने आप के ऊपर भी बहुत विश्वास है इनको। अगली गेंद को फिर से उठा दिया है, सीधे एक और छक्का। करना ही पड़ेगा उनको। पावर प्ले का 5वां ओवर है। 43, 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर रन तो ठीक आए हैं विभोर, लेकिन 3 विकेटों की जो क्षति है वो भारी पड़ रही है अभी व्हाइट रॉक्स पे। आप बेन स्टोक्स की बात कर रहे थे कि 4 छक्के खाने के बाद में वो सोच रहे थे कि लोग सोच रहे थे उनका करियर खराब होगा या खत्म होगा। ऐसे ही दूसरे खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्हें युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, उनका मुंह ऐसा हो गया था कि दया आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो क्रिकेट कभी नहीं खेलेंगे उसके बाद। लेकिन देखिए क्या कमाल की बॉलिंग उसके बाद उन्होंने की। और एक और फुल टॉस ऊपर से चली गई है, बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन। संदीप अपनी दिशा और लेंथ दोनों से हट गए हैं। पिछले ओवर की वाइडों से थोड़ा प्रेशर में आए हैं। मुझे लगा था कि बॉलिंग चेंज करेंगे कप्तान, लेकिन संदीप पे विश्वास जताया कप्तान ने। शानदार बैटिंग का प्रदर्शन अली के द्वारा। 4 ही बॉल खेले हैं अभी, लेकिन इंटेंट अच्छा दिख रहा है अली में। जी बिल्कुल, पावर प्ले निकलता जा रहा था, विकेट्स हाथ से जा रहे थे। अब ये ओवर थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस देगा। अली 4 गेंदों में 17, पिछली 3 गेंदों में 16 रन आए हैं। थोड़ा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले यहाँ देखने को मिला है। अभी तक किंग्स के फेवर में चला है। फिर से बड़ा शॉट, लेकिन ये अच्छी चीज़, अच्छा मूव है ये कि हमजा तारिक जो है वो ऊपर आ गए हैं अब स्टंप्स पे, बिकॉज उन्होंने देखा कि बैट्समैन स्टेप आउट कर रहे हैं। सो ये गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बैट्समैन के माइंड को पढ़ रहे हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को उसी हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं। सो ही सॉ दैट ही इज स्टेपिंग डाउन द ट्रैक अगेन एंड अगेन, ही स्ट्रेट अवे नाउ ऑन द स्टम्प्स। अब वो स्ट्रेट अवे डॉट बॉल भी देखने को मिली उसके बाद। ये देखिए एक और डॉट बॉल, क्योंकि वो बल्लेबाज बंद सा गया है अब क्रीज में, वो उनके पास फ्रीडम नहीं है, वो जानते हैं। और हमजा एक ऐसी क्लास के विकेट कीपर हैं, इज़ डन दैट एट इंटरनेशनल लेवल, तो वो आपको किसी भी समय किसी भी पेस पे स्टंप कर सकते हैं। सो एज अ बैट्समैन वो आपके दिमाग में थॉट रहता है कि आई कैंट स्टेप आउट नाउ। सो वो क्रीज के बीच में, वो पॉपिंग क्रीज के बीच में ही रहकर अपने शॉट्स खेलने होंगे। अब आखिरी गेंद, अच्छी फॉलोअप डिलीवरीज दो उस बाउंड्रीज के बाद। खेला हल्के हाथ से, रनआउट का मौका हो सकता है। डायरेक्ट हिट होती तो शायद नज़ारा कुछ और होता। फिलहाल सिंगल के साथ ओवर समाप्त। इट्स 48 for 3।
हवा में गेंद थी, थोड़ी देर के लिए चली गई है 4 रन के लिए और इट्स 50 अप। सुखदीप नए गेंदबाज, छठे ओवर के लिए, आखिरी ओवर पावर प्ले का। लेकिन अली यहाँ कुछ अलग फॉर्म में है, गेंदबाजी में आज महंगे साबित हुए थे तो आज अपने हाथ आजमाना चाहते हैं बल्लेबाजी में भी। wants to contribute because his team needs that kind of contribution because they've lost 3 early wickets. That's played away nicely again. That was on pads. Outfield's not that quick that it will go away for a 4, but it's nicely stopped by Chima there near the boundary marking. They'll come back for 2 easily. I think this partnership is going to be the key here for the Warriors. खेल में कुछ रुकावट, दोनों बैट्समैन डगआउट की तरफ जा रहे हैं। देखना पड़ेगा कि क्या मसला है। गर्मी है आज, तो हो सकता है कि क्विक ड्रिंक ब्रेक लेने की सोच रहे हो या बैट में कुछ इशू हो। जी लग रहा है कि हैंडल का रबर तंग कर रहा है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो किट है वो टॉप क्लास कंडीशन में रहे। जब आप गेम खेल रहे हैं, बैट्समैन के हाथ में जो फील है बैट का बहुत मायने रखता है। विभोर जी बिल्कुल, वो कंफर्ट बहुत ज़रूरी है when you are batting, and especially जो बल्लेबाज आप प्रोफेशनल लेवल पे ही खेलते हुए देखते हैं उन्हें, they are very particular about their equipments, whether it's helmet, gloves, bat or whatever it is. They wants to feel that comfort because अगर बैट्समैन कंफर्टेबल है तभी डिलीवर कर सकते हैं वो, तभी उनमें वो क्षमता भी रहती है डिलीवर करने की। 55 for 3 is the score right now. खेल शुरू होने वाला है, सीधा फाइनल लेग के हाथ में, और अली सोच रहे हैं कि क्या कर दिया मैंने। ये बहुत ही उम्दा जा रहे थे और मैं आपको बोलने वाला था विभोर, ये प्रदीप आउट हो गए। मैं आपको बोलने वाला था कि ये जो ब्रेक होती है ना, ये कभी कभार मोमेंटम को तोड़ देती है और हमने ये कई बार देखा है। बॉलिंग टीम को थोड़ा टाइम मिल गया, वापस प्लान डिस्कशन हुआ, भाई हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, क्या ठीक करना पड़ेगा। और इसी बीच बार बार हम ये चीज देखते हैं कि जब मोमेंटम ब्रेक होता है या ड्रिंक्स ब्रेक होती है, उसके अगली ही गेंद पे विकेट मिल जाती है। बड़ी क्षति ये व्हाइट रॉक वॉरियर्स के लिए। फिर से अच्छी फील्ड प्लेसिंग। मैं
आपको बोल रहा था कि कप्तान ने अच्छा फील्ड लगाया है। जी बिल्कुल, छोटे छोटे मार्जिन्स का खेल है क्रिकेट। ये 2 फीट दाएं या बाएं होती तो हम चौके की तारीफ कर रहे होते, लेकिन फील्डर सही पोजीशन पे था और कैच ग्रैब भी किया उन्होंने। नाउ वी आर प्रेजिंग अबाउट दैट विकेट। सो दिस इज अ गेम ऑफ स्मॉल मार्जिन्स। बिल्कुल, जो जीता वो सिकंदर। It was traveling. Do it on your live nature. सुखदीप अच्छी पेस फिर से फ्लिक कर दिया है। शॉर्ट फाइनल के ऊपर से 4 रन मिलेंगे। 1 मिनट में अच्छी शुरुआत नए बैट्समैन की। कभी कभार किस्मत भी खेल खेल जाती है, वही हुआ पिछले बैट्समैन के साथ। यही शॉट ये बैट्समैन ने खेला और 4 मिल गए। तो जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सुखदीप अच्छी वापसी करी उनने। ये लेंथ और ये लाइन बहुत ही मुश्किल खेलनी होती है। बार बार ऐसी डॉट बॉल्स या 1 रन वाली बॉल्स करनी पड़ेंगी किंग्स को। 60 पे 4, 10 ओवर खत्म। नए ओवर की शुरुआत। स्पिनर आए हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स शुरू किया उन्होंने। संजय पहली 2 गेंदें डॉट बॉल्स। सोना गोल्ड जिसे कहते हैं T20 फॉर्मेट में। ये बहुत ही गंदी गेंद थी। कुछ ट्राई कर रहे थे, हाथ से निकली नहीं बॉल। वाइड का इशारा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉलिंग साइड कुछ ज्यादा ट्राई न करे, अपना बेसिक्स पे ध्यान दें, कुछ ज्यादा ट्राई ना करे, क्योंकि स्कोर इतना विशाल है। 10 ओवर में 16 की एवरेज से 160 बनाने हैं।
61-62 हो गए अब, 62 पे 4, 6.3 ओवर समाप्त हो गए हैं। और ये इसको घुमा दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन पे। 1 रन मिलेगा भारत को। भाई संजय है ना, ये संजय है ना। शॉर्ट बॉल, इसे घुमा दिया है, पार्क के बाहर डिपॉजिट कर दिया है। वो किसी गाड़ी का शीशा, मेरे ख्याल से किसी गाड़ी के ऊपर लैंड की है। जी हाँ, ऊंचा शॉट, लंबा, बहुत ही आला शॉर्ट बॉल थी, पूरा फायदा उठाया उसका। ये शॉट में भी कमाल का जमाल। तेज गेंद, अक्सर देखा जाता है जब स्पिनर हिट खाता है तो गुस्से में तेज बॉल फेंक देता है। Go ahead, DJ. सात ओवर 70 पे 4। शुभम, जिन्होंने कमाल की बैटिंग की थी पहली इनिंग में, गेंदबाजी के लिए डेड बॉल होगी ये, बल्लेबाज तैयार नहीं थे। डेढ़ 150 रन चाहिए यहाँ से 13 ओवर में। किनारा, यहाँ कैच का मौका, विकेट हो सकती थी लेकिन ये दूर रह गई फील्डर से। सिंगल आया फिलहाल भरत और प्रप्रीत। हल्के हाथ से खेला और 2 की मांग है, मिल भी जाएंगे। अच्छी रनिंग, उन्हें गैप में प्लेस करते ही उन्हें पता था कि 2 रन तो आ ही जाएंगे। रिक्वायर्ड रन रेट 11.61। अगर ऐसी तरह चलता रहे तो ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं तो उधर था। बहुत अच्छा शॉट है ये, क्या बाउंड्री के पार। जी हाँ, 6 रन मिलेंगे। पिछले ओवर में भी एक अच्छा शॉट आया था, तो इस ओवर में अब अगर कैलकुलेशंस करनी चालू कर दी हैं वो व्हाइट रॉक ने तो 9 रन आ गए हैं। अब इसी ओवर को बड़ा बना सकते हैं क्योंकि अभी 3 गेंदें और बची हैं, शुभम पे और दबाव डाल सकते हैं। करंट रन रेट 10.53 एंड रिक्वायर्ड रन रेट 11.28। ये गेम अभी भी ऑन है, द गेम इज़ ऑन, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है। कभी भी आप कोई भी टीम को आखिरी गेंद तक रूल आउट नहीं करना चाहेंगे। दैट्स अपील एंड दैट्स गॉन। क्या किया यहाँ, मोमेंटम आ गया था हाथ में। पिछले ओवर में एक मैक्सिमम आया था, पिछली गेंद पे एक मैक्सिमम आया था और शायद वो
गाइड करके सिंगल लेने का प्रयास था उनका, स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास, जिसमें भारी किनारा और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। प्रप्रीत लौट रहे हैं पवेलियन, कॉट बिहाइंड होके। 17 किए इन्होंने 8 गेंदों में। शुभम को मिली उनकी पहली विकेट। जी हाँ, और यही दर्शाता है स्कोरबोर्ड प्रेशर। अच्छे रन आ गए थे ओवर में, लेकिन अगर स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं होता तो शायद ये गेंद छोड़ देते ये बैट्समैन। वाइड थी काफी, बाहरी किनारा लगा। 5वां विकेट लाल कलर की एक पाया है यहाँ पर टेंट के पीछे। किंग्स ने। मेरी लाल रन रेट का इतना मसला नहीं है विभोर, लेकिन विकेट पे किसी को खड़ा रहना पड़ेगा, एकदम टेंट, छोटा टेंट है, इधर आ गेम को डीप ले जाना पड़ेगा, तभी आप स्कोर के क्लोज आ सकते हैं, तभी आप मैच बना सकते हैं। और ये सबको मालूम है, कुछ ऐसी नई बात नहीं बोल रहा हूं मैं। जो हम बोल रहे हैं वो सबको मालूम है, बैट्समैन को भी मालूम है, वॉरियर्स को भी मालूम होगा। वही बात जो मैंने पहले कही थी कि जो प्रेशर में संतुलन बनाए रखेगा वही जीत के पास जाएगा। नए बल्लेबाज शैडली आए हैं क्रीज पे। शुभम अपने फील्ड को सेट कर रहे हुए, डीप फाइनल को थोड़ा स्क्वायरिश मूव कर रहे हैं। एक स्लिप रखी हुई है, अच्छी एग्रेसिव कैप्टनसी। पहली बॉल बॉलर के बाद वापस भेज दिया है, बॉलर ने कलेक्ट करके वापस जा रहे हैं। कैचिंग पोजीशंस में खिलाड़ी मौजूद हैं और यही करना चाहिए विभोर अभी। जी बिल्कुल, आखिरी गेंद है और विकेट आई थी इस ओवर में। सिंगल के साथ ओवर समाप्त। इट्स 80 for 5 at the end of 8. Oh yeah. No, it's important to have commentary
एक बहुत ही शानदार कैच एफर्ट देखने को मिला यहाँ पे। सुखदीप 1 विकेट ले चुके हैं, 13 रन दिए अभी तक उन्होंने इस स्पेल में। रन रेट ठीक ठाक चल रही है व्हाइट रॉक वॉरियर्स की, लेकिन विकेट्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है 3 ज़्यादा विकेट खो दिए हैं। अगर रन इतने ही होते और विकेट 2 खोए होते तो ये मैच का नज़रिया अभी कुछ और होता, लेकिन अभी काफ़ी प्रेशर में है। इक्यासी पे 5 है टोटल रिक्वायर्ड रन रेट, जो कि 11 के आसपास था, वो बढ़ के पहुंच चुका है 12 रन प्रति ओवर। अच्छा शॉट, Boundaries company. So that's not my call. दैट्स अ गुड वन। अच्छी गेंदबाजी, सिर्फ 1 रन आया उस ओवर में। 81 for 5 at the end of 9। हट गए किसी चीज से डिस्टर्ब। 81 पे 5, 67 गेंदों में 139 रन दरकार व्हाइट रॉक वॉरियर्स को। डिफेंडिंग चैंपियन है किंग्स, और चैंपियन की तरह खेला है आज, मानना पड़ेगा। अभी तक इसको उठा दिया है, कैच की गुंजाइश बन रही है, और बहुत ही अच्छी अटेम्प्ट थी, फंसा नहीं, हाथ में पहुंच गए थे, डाइव मारी। फील्डिंग उत्तम लेवल की रही है अभी तक। पिछले ओवर में भी बहुत ही कमाल का अटेम्प्ट किया था फील्डर ने। They're putting bodies on the line, playing like true champions here, Kings. Shubham is in his second over of the spell. Fuller ball has been picked up, is over the fielder's head. Maximum slot पे थी ये गेंद, उठा दिया इसको साइड स्क्रीन के बगल से। भरत 20 के निजी स्कोर पे पहुंचे। एक और ऐसा ही शॉट, जी हां, ये भी छक्का। यहां यही चाहिए व्हाइट रॉक वॉरियर्स को, यही नुस्खा। हाउ टू हिट द बैट बॉल्स। और शुरुआत में, ओवर के शुरुआत में बॉलर के ऊपर प्रेशर। शुभम, एक और, क्या ये कैच बनेगा? जी नहीं, एक बाउंस पे फील्डर फील्ड करते हुए
1 रन का इजाफा, स्कोर में स्कोर पहुंचा 96। 5 विकेट के नुकसान पे भरत 28। महंगा ओवर साबित हुआ अभी तक, इसको कट किया है पॉइंट के जानिब, वहां पे धालीवाल ने रोका, कोई रन नहीं। और इसको उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, कमाल का शॉट है ये बॉस। पिछली बॉल फुल लेंथ थी। 10 ओवर समाप्त, 102 पे 5। क्या शानदार ओवर रहा पिछला। 21 रन आए उससे। नए गेंदबाज, बड़े शॉट से स्वागत, 6 से स्वागत। शैडली ने भी अपने हाथ आजमाए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर ओवेस, कितनी बार हमने देखा है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने हमेशा बल्लेबाज अटैक करने जाता ही है। जी हाँ, मैचअप्स का जमाना, गेम काफी चेंज हो गई है। उठा दिया उसको, फील्डर के आसपास अटेम्प्ट करना चाहिए था फील्डर को, लेकिन शायद बाउंड्री ना हो इसके चक्कर में अटेम्प्ट नहीं किए। 50-50 चांस था, लेना चाहिए था मेरे हिसाब से फील्डर को। बस यही बात है, अंदर फील्ड के और बाहर फील्ड के, हम बाहर से बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अंदर की जजमेंट जो होती है वो अंदर की जजमेंट ही होती है। भरत 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 34 रन बनाकर नाबाद है, 17 गेंदों में स्ट्राइक पे हैं। बहुत ही अच्छी कलेक्शन, वाइड करार दी गई। एक अच्छे विकेट की कीपर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। गैप में खेल दिया है, दूसरे रन के देखते हैं आएंगे कि नहीं, नहीं आए। विभोर कीपर्स की बात चल रही है, तो आपके फेवरेट कीपर कौन रहे हैं? जी मेरे, अगर आप भारत से बाहर के नाम लें तो ऑब्वियसली भारत में तो MS धोनी मेरे फेवरेट रहे हैं, और रिद्धिमान साहा एक बहुत ही कमाल के विकेट कीपर। लेकिन MS धोनी वो कुछ खास टेक्निक नहीं थी उनकी विकेट कीपिंग में,
लेकिन वो जो लाइटनिंग क्विक हैंड्स थे उनके, वो जितनी तेज़ी से बेल्स को उड़ाते थे, सभी उनके फ़ैन थे। और अगर दो नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा, एक रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रैड हैडन। हवा में गेंद है फिलहाल, उसी बीच कैच का मौका बनना चाहिए। कुछ खास एफर्ट नहीं फील्डर के द्वारा, कैप्टन सुखजीत गिल थे वहाँ खुद। तो ब्रैड हैडन की कीपिंग का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था बल्लेबाजी में। हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग बहुत शानदार होती थी। और हाल ही कुछ समय में अगर बात करूं तो क्विंटन डिकॉक एक ऐसा नाम जिनकी विकेट कीपिंग बहुत ही शानदार रहती है। उन्होंने इतने अनबिलीवेबल कैचेस पकड़े हैं। वो मुझे याद आता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका की वो सीरीज़ फिलहाल एक बार फिर से हवा में है। इस बार आसान कैच का मौका है, फाइनली कैच पकड़ा गया। भारत जाएंगे पवेलियन। तीसरा चांस बना था इस ओवर में और फाइनली विकेट मिली ओवेस को। भारत जा रहे हैं वापस। 35 रन उन्होंने बनाए 19 गेंदों में। 112 पे 6 व्हाइट रॉक वॉरियर्स। ओवर की आखिरी गेंद पे विकेट चटकाया यहां स्पिनर ने। ओवेस नए बॉलर, रुक गए, फॉलो थ्रू पूरा नहीं हुआ। जी हां विभोर, बड़े बड़े धुरंधर कीपर हमने देखे हैं। आप फारूक इंजीनियर, एलन नॉट, जैक रसल, एक गेंद को खेल दिया, कवर की दिशा में मिसफील्ड हुई। एक रन से अपना इजाफा करेंगे अपने स्कोर में। राशिद लतीफ, वसीम बारी, कमाल के कीपर सैयद किरमानी, एडम गिलक्रिस्ट, रॉड मार्श, ब्रेडमैन के ज़माने में मैंने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है उनको। डॉन टैलन का बहुत नाम लिया जाता था। रनआउट का चांस, डायरेक्ट हिट, कुड हैव बीन क्लोज। लेकिन विभोर, मेरे सबसे फेवरेट कीपर आज तक सदानंद विश्वनाथ आए थे इंडियन टीम में। बहुत ही बेहतरीन कीपर। अगली गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन मिलेगा। जो वर्ल्ड सीरीज कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जो भारत ने जीता था, काफी बड़ा रोल था उनका। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग करते थे और गेम में बहुत एनर्जी लाते थे वो। बदकिस्मती से भारत के लिए काफी देर तक खेले नहीं वो, किसी कारणवश।
लेकिन कभी मौका मिले आपको तो उनके बारे में पता कीजिएगा आप। अगली गेंद, अच्छी लेंथ, अच्छी लाइन, 1 रन। सूरज भरत के आउट होने पे आए। सुखदीप अच्छी गेंदबाजी करते हुए विड्थ नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को अपने हाथ खोलने के लिए। अभी तक अच्छा तीसरा ओवर फेंका है उन्होंने। एक 117 पे 6 बीट हो गए। बहुत ही आला ओवर यहां फेंका है। 117 पे 6 12 में। अपील, हमजा बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बल्लेबाज खुद ही चल पड़े हैं। अच्छी टेक एक बार फिर से। विकेट कीपर्स की ही बात चल रही थी और ये लीजिए एक और अच्छी विकेट कीपिंग स्किल्स हमजा तारिक के द्वारा। पहले बल्ले से कमाल, अब विकेट कीपिंग में धमाल। व्हाइट रॉक वॉरियर्स 7वां डाउन। अभी नहीं जीतेंगे तो फिर दूसरा विकेट मिला ओवैस को अपना। संजय आए हैं बल्लेबाजी के लिए नंबर 9 पे। अब टेल एंडर्स की ओर बढ़ चुके हैं किंग्स और बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवैस। टप्पा बिल्कुल सटीक, एक्शन बहुत कमाल का। एक प्रॉपर फ्रंट लाइन लेफ्ट आर्म स्पिनर। 10 ओवर के बाद इंट्रोड्यूस किया कैप्टन ने। पहले ओवर में 10 रन दिए थे, एक विकेट भी आया था। और अब इस ओवर में 4 गेंदों में 1 विकेट के साथ कोई भी रन नहीं खर्च किया। दैट्स अ नाइस शॉट, लेकिन रन कोई नहीं मिलेगा। क्या ये विकेट मेडन हो सकता है? अब तक एक भी रन नहीं आया।
कैच का मौका सीधा खेल दिया। विकेट मेडन, डबल विकेट मेडन हो सकता था सिंगल के साथ। ओवर समाप्त 118 पे 7। सुखदीप अपना चौथा ओवर लेके इसको पॉइंट की दिशा में खेल दिया है। 2 रन चाहते हैं। जी हाँ, 2 रन मिल जाएंगे उनको। थ्रो अच्छा आया, सटीक थ्रो, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर, लेकिन 2 रन बचा नहीं पाए। 120 पे 7। कैच का कॉल, लेकिन गैप में थी बॉल। फिर से उसी दिशा में, फिर से 2 मिल जाएंगे। अच्छा शॉट। व्हाइट बॉल क्रिकेट में विभोर पहले खिलाड़ी जिन्होंने डबल 100 मारा कौन थे? ये आप सडनली स्मैश एंड ग्रैब से कौन बनेगा करोड़पति बना रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो शायद मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि क्रिकेट ज़रूर बहुत फॉलो की है, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट फॉलो की है। वो पिछले स्टैट्स शायद उतने ज़्यादा दिमाग में ना हो, लेकिन प्रॉबेबली सचिन तेंदुलकर ही हो सकते हैं। एक उस ज़माने में जो बल्लेबाज थे जिनके पास वो क्लास थी, या आई एम गेसिंग वीरेंद्र सहवाग हो सकते हैं। क्वेश्चन पे जोर दीजिए, मैंने वनडे इंटरनेशनल नहीं बोला। पहला डबल 100 वाइट बॉल ओडीआई, नॉट ओडीआई सॉरी, वनडे गेम 50 ओवर का। अगली गेंद ड्राइव कर दिया है, सर्कल पे फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। लिस्ट ए गेम में ग्रैम पोलक ने 222 रन बनाए थे, साउथ अफ्रीकन ग्रेट ग्रैम पोलक। लेकिन किसी भी आईसीसी ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट में सबसे पहली बार डबल 100 लगाया था सैयद अल सफार ने, जो यूएई के खिलाड़ी थे। उन्होंने 96 का वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट किया था यूएई के लिए एसीसी ट्रॉफी में। ओवेस एक बार फिर से अटैक में बहुत शानदार ओवर किया था पिछला। 1 विकेट आया था पिछले ओवर में और सिर्फ 1 ही रन। फुल टॉस थी ये,
11 रन दिए हैं अभी तक इन्होंने अपने स्पेल में, जिसमें से 10 पहले ओवर में दे दिए थे। तो एक अच्छी कमबैक देखने को मिली है। स्लॉग स्वीप, अच्छा शॉट, और अब 6 रन देकर जाएगा सूरज के बल्ले से। मैं श्रोताओं को फिर से बोल दूं, क्वेश्चन वनडे इंटरनेशनल नहीं था तो सचिन पाजी नहीं थे पहले खिलाड़ी। आईसीसी ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट था, लिस्ट ए में भी क्वालिफाई नहीं होता है वो। थाईलैंड के खिलाफ ग्रुप बी मैच हो रहा था एसीसी ट्रॉफी में, जहां पे उन्होंने 208 नाबाद बनाए थे। इसी बीच अगली गेंद ओवेस की, इसको कट कर दिया पॉइंट की दिशा में। नॉन स्ट्राइकर काफी बैकअप कर चुके थे लेकिन कोई क्षति नहीं पहुंची। काफी टाइम था उनके पास वापस आने में, क्रीज में वापस आने के लिए। 16.5 रन की औसत चाहिए अभी, लगभग नामुमकिन। लेकिन जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती, क्रिकेट में ऐसा माना जाता है कि कुछ कहा नहीं जाता, कुछ कह नहीं सकते। ओवर समाप्त 134 के साथ 15 ओवर के बाद। New over about to begin here. The 16th of the inning. Required run rate jumping past 17 here now. 84 required in 5. Slog attempted, wide given by the umpire. Couldn't get the momentum. The Warriors. Shubham, who batted brilliantly, wide outside the off stump, in the air, maximum, over cover point boundary. That was a loose delivery, full toss. Sanjay freeing his arms, giving it everything he had. Didn't even try to keep it on the ground. Score moves up to 141 for 7. Shubham has been a tad expensive, but he did pick up an important wicket. "22 yards network. Please like and subscribe." Shubham wide outside the off stump, moves away from the batsman. Was a tad bit around that guideline. Remember, the line belongs to the umpire. Umpire Neeraj there trying to explain his decision. Not many umpires do that. Shubham once more comes out.
Lifts it over, cover point boundary. Boundary signal by the umpire. Sanjay is trying to get back some momentum in the Warriors innings. Pretty expensive Shubham there. But that boundary should have been stopped. Full. Trying the Yorker length. Ended up low full toss. Difficult to get away low full tosses as well. But once you get hold of these low full tosses, you'll find them outside the park more often than not. Slower one through the air. Pick up a single as the ball is fielded on the circle. .72 required from 26 balls. That's good bowling. That's where he should be targeting. The call for second. The fielder is already there. Would have been a disaster. The two batsmen now talking to each other, and rightly so. Last ball of the 16th over coming up. As we see sun going behind clouds again. This one has been slog swept from the length. Should be a boundary. Is a boundary. A lot of cheer coming out from the Warriors dugout. 153 for 7 in 16. .153 for 7. Shuffles across. That's in the air. Chipped. And that's a easy catch. It looked like there was a partnership building with the Sanjay and Suraj there. Now Sanjay has lost his wicket. Always takes his third one for the day. He has been amazing in his bowling. The way he has changed the pace and varied the lengths. At times he has been targeted by the batters, but he has responded strongly. The score is now 153 for 8. They need 67 from 3.5 overs now. Looks like Sukhjinder was walked in to bat at number 10 for his team, Whiterock Warriors. Usually known for his bowling.
Takes a single, gets off strike on his first ball. Tries to reverse it. Suraj. Has been there for last 12 deliveries. Has scored 15 runs. This time he goes slog. And fielder didn't go for the catch. We have seen a lot of wicket keepers who likes to sweep the ball a lot. Mushfiqur Rahim from Bangladesh is one of the examples, because wicket keepers tend to play more sweeps against the spinners than any other batters. Spelling तो ठीक है. ठीक है spelling. Yeah. Comment. Oh, comment. Okay. Open. Last ball of Oasis. Fourth over, that's in the air. Now this is a chance of a catch. This has dropped. They have dropped many catches. They have took few. It's end of the over, 158 for 8. 157 for 8, in fact. Simran comes into the attack once again. They're pushing hard for 2. They won't get that. It's a big shot from Sukhjinder. Shot of a catch. Fielder drops it again. They're relaxed. They're getting a little casual here, Kings 11 Calgary, because they know now required run rate is 22 runs per over required. They need 61 runs from 16 deliveries. They need a miracle here. Whiterock Warriors to pull this off. Simran has taken 2 wickets in his 2.2. Steps out Suraj again, plays it near the extra cover, gets a single. And it's overthrows, so they'll come back for 2. Suraj's back on strike now. That's pulled away nicely, but not in the gap. Will be just a single. Big shot from Sukhjinder once again, powerfully struck here. Near the long on, will be a single again. 57 now required.
will be just a single to end this over. 164 for 8. Nineteenth over and proceeding. Sundeep comes back for his last over. Kings 11 Calgary. They're cruising towards the finals now. They need 56 from 11 deliveries. One of the benefits that they'll be having is they know the conditions better than the other team. If Banff comes in to the finals, then it's going to be a tough one because that team has played more of their games in this round. And now Kings have played the semi-final here, so it'll be a tough fight. But if Calgary Super Kings comes in, they haven't played a single game here yet. So it can be a different kind of challenge for them as well. But they are a really solid side too. But semi-final 2, which is happening at the West Winds Cricket Ground, is at an interesting stage as well, because Calgary Super Kings, they're chasing 140 and they're struggling a little there. That's a shot played by Sukhjinder. Goes over the infield. They'll come back for 2. Score moves to 167. Now the net run, the required run rate, in fact, has gone past 36 runs per over now, which means now it's just formalities that they have to. But in the meanwhile, look at that shot. A beauty from Sukhjinder's bat. He got smacked away for a few maximums. It's a good time to take revenge. I know there's nothing much left in the game, but Sukhjinder's playing his part too. जी हाँ, मात्र औपचारिकता रह गई है. देखा जाए तो विभोर किंग्स के कैप में सवेरे से एक एनर्जी देखी मैंने, और ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये हरफनमौला परफॉर्मेंस है किंग्स की टीम से. एक 174 पे 8. Last 6 balls of the match. Sundeep finished his quota of overs, gave 41 from his 4 and took a wicket. Simran picked up 2 important wickets in important
times of the game, although the Warriors didn't get any momentum right from the beginning of the chase. Law of averages catching up with Warriors. They were sitting pretty on the top of their table, and VIBHOR did speak about their net run rate being more than 5. Kings speaking at the right time. They would be mighty pleased with this performance. The next ball has been dispatched towards cow corner. Fielder cuts and throws back to the bowler. I'm not sure if Warriors really expected Kings to score as much. It's a boundary, I think. No, it's been stopped. There's a fielder there. Yeah. Not visible among the crowd. .176 for 8. मेरे लिए टर्निंग पॉइंट विभोर जो था वो टॉस ही था. टॉस जीत के बड़े गेम्स में बैटिंग स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाना अक्सर फायदेमंद रहता है, लेकिन जैसा मैंने कहा मैदान के बाहर से हम बहुत कुछ सोचते हैं, टीम का प्लान कुछ और होता है. चार रन. आपके हिसाब से मैच कहां पे पलटा? जी मुझे लगता है कि सबसे पहले तो पावर प्ले में रन बहुत ज़्यादा लीक किए और विकेट्स लेने में कामयाब हुए नहीं बिल्कुल भी. अगर आप वहीं किंग्स 11 कैलगरी देखें, लगातार विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे पार्टनरशिप बनने ही नहीं दी. लेकिन किंग्स 11 कैलगरी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने कुल मिला के 3 विकेट खोए. पहले पार्टनरशिप ओपनर के साथ, फिर उसके बाद हर रॉबिन के साथ वो पार्टनरशिप, फिर शुभम के साथ हमजा की पार्टनरशिप, एंड फिर वो मैथ्यू और शुभम की फिनिशिंग टचेस वाली पार्टनरशिप, जिसके चलते इतना बड़ा टोटल. आखिरी गेंद इस मैच की किंग्स 11 कैलगरी एक बार फिर से फाइनल में पहुंच चुके हैं. जगह बना ली है फाइनल में. 180 पे रोका. एक बहुत बड़ी टीम व्हाइट रॉक वॉरियर्स को एलिमिनेट किया है इस टूर्नामेंट से. उनकी फाइनल की उम्मीदों को खारिज किया है एक कमाल के प्रदर्शन से. लगभग वन साइडेड सेमीफाइनल को अपने नाम किया. ये देखिए स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पे. गुरनेक 8, मनसब 1, हरमीत सिंह 7, प्रप्रीत 17, अली 25 रन किए, भरत अरोड़ा ने 35 किए. स्टार्ट मिले हैं कई बल्लेबाजों को, लेकिन वो बड़ा स्कोर चाहिए था, एक बड़ी पार्टनरशिप्स चाहिए थी जो कि नहीं मिली. लेकिन वहीं गेंदबाजी में देखें बॉलिंग कार्ड, 4 ओवर संदीप 41 रन 1 विकेट, 4 ओवर 30 2 विकेट सिमरन. सुखदीप 4 ओवर 26 1 विकेट, 1 ओवर 10 रन संजय कृष्णमूर्ति और 3 विकेट ओवेश जमशेद 23 रन देके. किंग्स 11 कैलगरी एक बार फिर से पिछले साल के चैंपियन, 2024 के चैंपियंस, एक बार फिर से फाइनल में जगह बना ली है. किसको फेस करेंगे फाइनल्स में ये तो देखना होगा. क्या होगी वो बैंफ या फिर कैलगरी सुपर किंग्स, वो मुकाबला भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस समय. लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ भी बैंफ थोड़ा सा आगे हैं गेम में. 86 पे 8 विकेट खो चुकी है कैलगरी सुपर किंग्स. अगर उस मुकाबले की बात करें तो फाइनल में जो भी पहुंचेगी टीम, जो कि बैंफ ज़्यादातर नज़र आ रही है, वो ज्वाइन करेंगे किंग्स 11 कैलगरी को. और बहुत ही शानदार फाइनल एंटिसिपेट कर रहे हैं हम यहाँ. जल्दी से जाएंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ, मैन ऑफ द मैच लेंगे और फिर होगी इनिंग्स ब्रेक.
एंड 4 बजे होगा स्मैश एंड ग्रैब का फाइनल. We are ready with the post-match presentation. What a beautiful semi-final we had. Kings 11 Calgary has made it to the finals. I have the man of the match alongside me, Shubham, who gave a brilliant performance with the bat and with the ball too. I have my co-commentator Sandeep Rana alongside me, and our guest to present this award, Mr. Akib, our Vice President of CNDCL. We are lucky to have you here, and he's going to present a man of the match to Shubham for his brilliant performance that he played in the semi-finals. We'll have a quick chat with Shubham too. Shubham, straight away moving to you. I know it was a big game, so you need to perform well, obviously. How are you feeling about this? You have made it to the finals now. It's been great though. After the second tough loss, we made our mind we have to come back stronger. Just taking the positive ahead in the semi-finals and the third game we had yesterday with the momentum we had. It was all about carrying that momentum into semi-finals. That's what we did, and we carried a lot. Taking out the positive, just hopefully we carry this momentum in the finals, and it's all about playing good cricket. What do you want to say about Hamza's inning? Because that kind of laid the foundation for a big score. What's your thought on that? It was a brilliant inning though. The start we needed, and he really batted there. It was smart decisions and smart play out there, and we were like, it's all about communication with him, and he was set out there. It's all about carrying the momentum while batting as well. And the most important, we really batted well in the middle overs that took the game away from them. That's what I thought. All right. Good luck for the finals. If Sandeep, you would like to ask something to him. सवेरे जब आप आए थे किंग्स का कैंप it was buzzing with energy. क्या टीम टॉक था? Yeah, actually, आके it's all about कि आप क्या करना चाहते हो and just staying in the present. आप present में क्या चीजें सोच रहे हो और क्या करना चाहते हो. That's the way we play cricket, and it's all about taking decisions at the right time and carrying this momentum. It's all the 11-man game. We have to contribute highly in the game, so that's what the positives we have taken forward. You were put in for batting. Were you surprised that Warriors chose fielding? Yeah, I think it was the right decision though. But exactly end of the day, कि आप क्या खेलते हो, कैसे खेलते हो, what decisions you take, and how you play at the center, that matters the most. When you guys went in, what was the team target? What were you looking at? The way we started, we were just looking at the 5 overs. We had a small target in 5 overs that really worked for us out there. And end of the 5 overs, we really thought about going 60 to 70, and that thing we achieved it. Great. हिंदी में जिसे बोलते हैं हर फिल्म वाला परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस दी आपने. Go well for the finals. All the best. Well played. All right, that was man of the match, Shubham, who played a brilliant knock. And I have another big player from Calgary, Mr. Hamza Tariq. I'd like to welcome him as well. Hamza bhai, पहले ही game से पहले बात कर रहे थे कि you need a big knock as well. You were brilliant yesterday, but today was the day that mattered and you delivered. How are you feeling about this?
obviously, you feel good once you win the semifinals and you're into the finals. But we knew that this is a good team. We had to come out hard. Last game, we kind of were on the back foot right off the bat, and we wanted to make sure we put them on the back foot this time around. You made 220. Were you thinking like, is it a good score against them? Yes and no. Obviously, 220 is a tough score in any pressure game, any playoff game. But we also knew they have the batting lineup to chase us down, and you could have seen how the momentum was shifting every so often. But it was always going to be tough for them, and I'm happy we came out on top. What's your thought on Smash and Grab 2025? It's been a brilliant tournament so far. I think it's been in terms of the organization piece of it and the details that they've put their efforts into. I think it's probably the best smash and grab that I've seen. I've missed a few in the past, but I'm happy that I could take part in this one. All right, good luck for the final. Thank you so much for joining us. This was Hamza Tariq, one of the key players for Kings 11 Calgary who have made it to the finals. We're going to move to the toss of Calgary women's cricket. We'll be having a women's match, and women's are ready to fire the cricketing power of their skills. They're going to show it to us on the screens of Live 22. Yes, we're going to shortly move to the toss. Thank you so much for joining us. This is VIBHOR, and this is SUNDEEP. Thank you.